Yes, Prasad, you are audible. Okay, great. We will just wait for the 5 to 10 minutes, then we will start. Okay, sure, no problem.
Hi guys, am I audible to you? If yes, please thumbs up. React thumbs up. Okay, great. So just was waiting कि numbers सौ के ऊपर जाए, so we will start. And I guess 99, 100 ऊपर नीचे हो रहा है. So guess we'll wait for a minute and we'll start soon. Okay, great. I guess सभी ने join कर लिया है. So start करें? Great. So you all guys know. So we are here for the interview preparation masterclass. So फ्लो ऐसा होगा कि इंटरव्यू कैसे दे, इंटरव्यू कैसे होनी चाहिए, तो इसी बारे में हम बात करेंगे. राइट, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, इंटरव्यू में कौन से राउंड्स होते हैं, क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है, resume building, LinkedIn profile, and there will be few bonuses at the end of the webinar for you. कोई कौन कौन बोनस के लिए एक्साइटेड है? रेज योर हैंड. ओके, सब इंथुजियास्टिक लग रहे हैं यार. सो ओके, सो इंजीनियरिंग वाले कौन कौन है? अपने अपने ब्रांच कमेंट करो प्लीज यार. कौन मैकेनिकल का है, कौन कॉम, कौन सीएस? आई गेस चैट तो नहीं दिख रहा है. तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि काफी लोग कॉम कॉम सीएसई. ओके, आईओटी, ग्रेट. आप कुछ भी है, एआई एमएल, मैकेनिकल वाले भी बंदे कोडिंग सीख रहे हैं. ग्रेट यार. आईटी डिपार्टमेंट, एमसीए, बीसीए, डेटा साइंस एज वेल. ओके, बीटेक इलेक्ट्रिकल, एमसीए,
सो मोस्टली सब तो टेक्निकल बैकग्राउंड से, आईटी, कॉम, सीएस, बाकी एआई, एमएल, बीसीए, एमसीए। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो सभी आई गेस टेक्निकल फील्ड के हैं। सो मोस्टली सो वी विल फोकस ऑन टेक्निकल इंटरव्यूज कैसे होते हैं, उसका फ्लो क्या होता है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेमिनार। So I'm sharing my screen now. Okay, is my screen visible to you? Okay, great. So today we will start with the interview preparation strategy. I guess सभी इंटरव्यू देने के लिए एक्साइटेड होंगे। नहीं, वैसे तो इंटरव्यू का नाम सुन के तो मुझे तो डर ही लगता है। इंटरव्यू ये शब्द सुन के ही ऐसे नर्वस फील होता है। पर्सनली तो मुझे तो होता है, लाइक इंटरव्यू दे रहा हूँ या ले रहा हूँ तो आई गेस कि कभी भी एक तो फील आती है यार इंटरव्यू है आज। एक पूरा नर्वसनेस होता है कि हम कितना भी प्रिपेयर्ड हो, फुल नर्वस है, क्या करूँ, इंटरव्यू देना है। प्रिपेयर्ड तो सब हो यार, ये ना पूछ ले, वो ना पूछ ले, अरे यार सीपीपी का क्वेश्चन ना पूछ ले, अरे एसक्यूएल का पूछ लिया तो, प्रोजेक्ट्स का पूछ लिया तो, मैंने यार एआईएमएल भी मेंशन किया है, यार वेब डेव का भी थोड़ा सा पूछना पड़ेगा। ओ, क्या करूँ क्या करूँ, फिर इंटर्नशिप, इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेशंस। सो बहुत सारे क्वेश्चंस होते दिमाग में कि यार क्या चाहिए क्या नहीं। सो विल गो थ्रू इट वन बाय वन एंड विल लाइक क्लियर योर ऑल डाउट्स, जो भी आपको डाउट्स है। ओके, ग्रेट। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यू मतलब नर्वसनेस, सभी नर्वस और इंटरव्यूज के लिए। राइट, ऐसा तो कोई है क्या जो इंटरव्यू है तो मजा आ रहा है मुझे यार, मैं तो इंटरव्यू देने वाला हूँ? कोई है ऐसा? इफ यस, ओके। यार काफी कॉन्फिडेंट हो यार तुम। बाप रे, काफी कॉन्फिडेंट लोग है। ठीक है, देखते हैं। अभी कभी आपका इंटरव्यू हुआ तो समझ में आ जाएगा कि आपका कितना कॉन्फिडेंस था। ओके, ग्रेट। यस यस, चलो, थैंक यू। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, बट इंटरव्यू अच्छा आपका जाए तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की तो ज़रूरत है, राइट? क्योंकि इंटरव्यू में हम जाते हैं तो खुद ही प्रिपेयर होके जाते हैं, सो हमें लाइक कुछ टिप्स ट्रिक्स नहीं पता होती, या क्या करना चाहिए वो नहीं पता होता। सो वी डोंट नो व्हाट आर डूज एंड डोंट्स while like preparing for the interview, while attending the interview, or during the interview and after the interview. So we will learn everything, and with the good understanding and everything, so you will have a good interview where you can showcase your skills. And how can we like ace a good interview? So what are the important tips? Like, see, according to me, तो skills तो important है भाई। like कुछ भी तो हो, तुम इंटरव्यू में जा रहे हो, अच्छा अच्छे से प्रिपेयर करके गए, मैं रेज्यूमे अच्छा है, प्रोजेक्ट्स डाले, स्किल्स डाले, पर वो स्किल्स तुम वैलिडेट नहीं कर पा रहे हो ना, सो मतलब कुछ भी उसका मतलब नहीं है तुम्हारे रेज्यूमे का, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स का। जो भी स्किल्स है तो स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। सो कौन किसी किसी लगता है लाइक स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, कुछ इमोटिकॉन्स भेजो यार। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, वेब डेव किसको पसंद है? वेब डेव डेवलपमेंट वाले। बाप रे, वेब डेवलपमेंट का काफी क्राउड है। ओके, ठीक है ठीक है। अभी एंड्रॉयड, ओके, एंड्रॉयड वाले भी काफी लोग हैं। ओके, और अभी तो बजवर्ड्स चल रहे हैं, वेब 3, एआई, एमएल, डेटा साइंस, उसमें कौन कौन इंटरेस्टेड है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट।
ऑलमोस्ट सभी को लाइक एआई सीखना है, एमएल सीखना है, लाइक सबको डेटा साइंस पोजीशन चाहिए, राइट? या फुल स्टैक वेब डेवलपर, एमएल इंजीनियर, एआई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट? ग्रेट यार, सबके गोल्स मतलब हाई रखे हैं आप लोगों ने, बट स्किल्स भी तो हाई रखने पड़ेंगे, राइट? ठीक है, स्किल्स तो वैसे भी आप गेन कर ही रहे हो, राइट? कॉलेज में तो पढ़ाते हैं ना कोडिंग, पढ़ाते हैं ना? तो यार कौन सा कॉलेज है जो कोडिंग पढ़ा रहा है? पढ़ा रहे हैं कोडिंग कॉलेज में? ओके, ठीक है यार, कोडिंग तो खुद ही पढ़नी पड़ेगी, और कोडिंग तो ऐसे पढ़ के तो होता ही नहीं है, प्रैक्टिस सबसे तो इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस। असाइनमेंट तो तुम कर ही लोगे कॉलेजेस के, कोडिंग तो कौन करेगा? ठीक है, सो प्रिपेयरिंग फॉर द कोडिंग इज यूर लाइक आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कोड प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी अपनी स्किल्स मेंशन की है, लाइक किसी का कुछ भी हो यार, सीपीपी हो, या जावा हो, या वेब डेव हो, या एआईएमएल हो, पाइथन हो, सो अपने अपने स्किल सेट्स के हिसाब से कोडिंग करो, प्रोजेक्ट्स करो, इंटर्नशिप्स करो, एंड सर्टिफिकेशंस भी। ओके, सो एक बाय एक सम देखेंगे सब। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो एक अच्छा इंटरव्यू जाने के लिए क्या चाहिए? सो लाइक व्हाट मेक्स अ ग्रेट इंटरव्यू? फर्स्ट थिंग कम्स टू इन माय माइंड, लाइक आई विल सी अ रेज्यूमे। सो रेज्यूमे नॉट, ऐसा नहीं हो कि रेज्यूमे एकदम अच्छा हो, कुछ भी अच्छा, अपने इमोटिकॉन्स डाले, या एकदम कलर फॉर्मेट मस्त है, कैनवा पे बनाया आपने, या किसी टेम्पलेट यूज करके बनाया, तो दैट्स इम्पोर्टेंट, या सिंपल रेज्यूमे इज इम्पोर्टेंट? व्हाट यू थिंक? चैट्स तो लोड नहीं हो रहे हैं? आई थिंक सिंपल इज गुड, सिंपल इज गुड, resume is most important, skillful resume is important, right? Precise and concise, हाँ ये इस बात में आऊंगा मैं। ओके, तो सब सिंपल 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 सिंपल, ओके ग्रेट, तो लाइक सब सिंपल रेज्यूमे प्रेफर कर रहे हैं? यस, ओके, यस, हम बताएंगे लाइक रेज्यूमे आपका कैसा हो, सिंपल हो, या लाइक थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, कीवर्ड्स क्या हो उसमें, स्किल्स क्या हो, सब बताएंगे एक धीरे धीरे धीरे। And what's the next important thing? See, according to me, having a good resume is important, as well as having good skills, having good projects, completing your internship, and also certification. Also, you should have a platform where you can showcase your skills. वो भी लाइक लिंक्डइन हो सकता है, या आप आपके स्किल्स वहाँ पे शोकेस कर सकते हो, लाइक पोस्ट कर सकते हो, थोड़े से कमेंट्स करो, थोड़ा सा प्रोफाइल बनाओ, ठीक है? और आप खुद का लाइक जीएफजी अकाउंट रख सकते हो, या लाइक हैकर रैंक, लीड कोड। ठीक है, मुझे बताओ यार, लीड कोड कौन कौन कर रहा है यार, लीड कोड वाले, कोड लीड कोड के, बस एक ही बंदा कर रहा है लीड कोड? हैकर रैंक, ठीक है, जीएफजी मुझे कोई नहीं कर रहा? ओके, कर रहे हैं लोग। सो लाइक मतलब आप तो कोडिंग तो कर रहे हो, ओके ग्रेट, लीड कोड, जीएफजी, हाँ मतलब सब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग लिख रहे हैं हैकर रैंक, जीएफजी एंड लीड कोड, ऐसा ना करो यार, एक तो एक प्लेटफॉर्म पकड़ लो, लाइक सभी प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, so like considering GFG, उसी पे भी like hard, medium and easy level के questions है, so you can go through like easy questions करो, like 100 easy questions करो, फिर move on to medium questions, and if you are like expert with that skills and hands on काफी हो चुका है, so hard
क्वेश्चन ट्राई करो। लाइक आई गेस एक क्वेश्चन को 30 मिनट से 1 घंटा भी लग सकता है, या पूरा दिन भी लग सकता है, अगर आप उतने इंथुजियास्टिक हो करने में तो। नहीं तो यार कोड का सोल्यूशन देख लिया तो वैसे भी मैं भी लीड कोड कर लूंगा, हार्ड क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लूंगा। कौन कौन कॉपी पेस्ट कर रहा है यार बताओ। चैट जीपीटी कौन करता है कोड्स? लीड कोड इज बेस्ट हैकर है। काफी लोगों ने सो लाइक सम ऑफ द गाइस हैव सॉल्व अराउंड 500 प्लस क्वेश्चंस, किसी ने थाउजेंड्स की। ओके, चैट जीपीटी कौन करता है कोड्स? कमेंट चैट जीपीटी। कभी कभी चैट जीपीटी। ओके, हिंट्स देखने के लिए सॉल्यूशंस देख लेंगे। जो भी हो, लाइक डायरेक्ट तो कॉपी पेस्ट मत करो कोड, समझो, थोड़े से हिंट्स लो। आई नो कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना वर्थ नहीं है, बट यू कैन टेक हिंट्स। और अगर आपने काफी टाइम दिया है लाइक 30 to 40 मिनट्स या 1 आवर, सो यू कैन हैव अ हिंट और कोड। वैसे भी कोड मिला तो ऐसा नहीं फटाक से कॉपी पेस्ट करो, उसको लाइक समझो, फिर अपने खुद के हिसाब से इम्प्लीमेंट करो। यूज डिफरेंट डेटा टाइप्स, जो भी आप लैंग्वेज में यूज कर रहे हो, तो कुछ थोड़ा सा ट्विक करके यूज करो, खुद का थोड़ा लॉजिक लगाओ, क्योंकि आपको बाद में याद रहेगा। ओके, गॉट माई पॉइंट। ओके, 3 मंथ स्ट्रिक्स। हाँ यार, स्ट्रिक्स बनाने का तो एक ट्रेंड है। कुछ लोग कोडिंग प्लेटफॉर्म पे स्टिक्स बना रहे हैं, तो कुछ लोग स्नैपचैट पे। मैं स्नैपचैट पे तो बना के तो फायदा नहीं है, इंटरव्यू में तो नहीं बता सकते ना मेरे स्नैपचैट पे 100 डेज स्ट्रीक है। बट यार, आप तो इस कोडिंग प्लेटफॉर्म के स्टिक्स दिखा सकते हो, राइट, शोकेस कर सकते हो आपके रेज्यूमे पे भी और लिंक्डइन पे भी। तो कौन कौन स्टिक्स बना रहा है? डेली कोडिंग कौन करता है? ओके ओके ओके, काफी लोग। ओके, सो आपके एक एक क्वेश्चंस I will try to answer. So let's move on to the webinar back again. So we'll share some tips and tricks and good strategies. Then we'll answer your questions. Okay, fine. Give me thumbs up. Okay, great. The first thing comes in my mind is resume. Okay, resume is important as we discussed earlier. तो resume कैसा हो? So resume क्या चाहिए और क्या नहीं? So crafting resume is the most important thing according to me. So you should have like key elements जो भी आपके like contact details, objectives, experience, education, और सबसे important skills। skills भी तो होने चाहिए। resume कितना भी अच्छा हो, but you should have skills। you should have multiple skills I guess। like you should have जो web dev के हो, थोड़ा सा core language हो, and also you should have like a sound knowledge of the core subjects। like, उससे भी तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, like OS को, CNS, और OS CNS तो ये तो इम्पोर्टेंट है यार, BA से भी है, डोमेन नॉलेज तो होना चाहिए। ओके, विल शेयर यू what are the do's and don'ts of the resume writing, how should you craft your resume, how your resume should look like। have you heard about ATS, JD, कीवर्ड? बज़वर्ड सुने होंगे अपने रील पे या किसी प्लेटफॉर्म पे। किसने किसने सुने? ATS, कीवर्ड्स, JD। ठीक ठीक है। सो आपका लाइक टेक यूट्यूबर कौन फेमस है, या टेक इंस्टा क्रिएटर, लाइक जैसे कि लव बब्बर, स्ट्राइवर, अमन दत्तरवाल? बताओ यार, आप किस किस को फॉलो कर रहे हो? ये कोड बब्बर कौन है? ओके, कोड बब्बर भी है क्या कोई? हाँ, इजी स्निपेट। हाँ, इजी स्निपेट तो मेरा भी पर्सनल फेवरेट है फिलहाल, इंस्टा पे काफी छाया है। ओके, हैरी, कोड विथ हैरी। हैरी भाई तो हमने स्टार्ट किया था। संकेत सिंह, हितेश चौधरी,
कोड हेल्प, ओके कोड हेल्प बाय लव बुपर, ओके कोड विथ हैरी, ओके ओके, मतलब सभी लोगों के थोड़े थोड़े से फैन। ओके, जेनी लिख रहे हैं कोई, ओके, जेनी मैम के भी फैंस दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, श्रद्धा दीदी, अपना कॉलेज, ओके। सो लाइक काफी लोग आपके पास मेंटर्स तो है, बट ऐसा नहीं है कि यार तुम बस वीडियो देख रहे हो। मैं भी लाइक इनिशियली बस वीडियो देख रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा। आई एम लाइक कि लेट मी फिनिश दिस सीरीज, ये वीडियो देख लूँ, फिर एट द एंड विल कोड सब। पर एट द एंड मैंने तो अभी तक कोड किया ही नहीं। सो एक तो आप वीडियो देख रहे हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लिया, सो पॉज करो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बाकी वीडियो देख देख के तो उनके व्यूज बढ़ा रहे हो आप बस। मेरे पास तो मेंटर नहीं है। तो सी, आप मैं उसी पॉइंट पे भी आता हूँ, मेंटर आपके पास कैसे आ सकते। ओके, सो विल टॉक अबाउट रेज्यूमे नाउ। रेज्यूमे कैसा हुआ आपका, व्हाट थिंग्स यू शुड मेंशन इन योर रेज्यूमे, व्हाट एक्सपीरियंस शुड यू ऐड। विल टॉक अबाउट द internships, about projects, about academic skills, and also technical and non-technical skills as well. Okay, so I'm sharing you a format of a resume which I personally find attractive. मतलब ये सिंपल भी है। जो एटीएस, जो आपने एटीएस सुना है ना, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, तो एटीएस फ्रेंडली है। सो आपका रिज्यूमे लाइक जो भी वर्ड्स में हो, डॉक्स में हो, मोस्टली इट शुड बी इन वर्ड और डॉक। यू शुडंट हैव लाइक रिज्यूमे पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है, या किसी का फोटो दिख रहा है, या किसी ने स्टार्स बनाया है, या किसी का लाइक लोड हो रहा है। आई नो द क्रिएटिव रिज्यूमेस थोड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, बट मोस्टली व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर लाइक अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर रहे हो ना, तो वहाँ पे तो ए आई एम एल काम करेगा। जो भी ए आई बॉट्स है वो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने वाला है। आपका लाइक अट्रैक्टिव रिज्यूमे कब काम आता है, व्हेन यू आर ईमेलिंग समवन, और व्हेन यू आर गेटिंग रेफरल, or you are applying through the resume submission. Okay, but when you are applying through the websites or some portal, और जो भी प्लेसमेंट के आपके एप्स होंगे कॉलेजेस के, वहां पे अप्लाई कर रहे हो, सो लाइक दे आर स्ट्रिक्टली यूजिंग एटीएस। सो ऑटोमेटिकली विद द कीवर्ड्स द रिज्यूमे इज गेटिंग शॉर्टलिस्टेड, एंड यू आर वरिंग कि यार मेरा रिज्यूमे क्यों शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा। एक्स वाई जेड बंदा है, वो लाइक कॉलेज में प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, उसका नाम आ रहा है, लाइक वो खुद का नाम डाल रहा है क्या, ऐसे किसी किसी को लग रहा है। बताओ यार, ऐसा किस किसको लगता है। ओके ओके, सो पहले बताओ यार, आप कौन से ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इंजीनियरिंग वाले, फाइनल ईयर वाले कौन कौन है, थर्ड ईयर वाले कौन है। कि थर्ड ईयर वाली काफी गैंग है। थर्ड ईयर फाइनल ईयर, पास आउट, जस्ट कंप्लीटेड एमसीए, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, ऐसा भी बंदा लाइक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप कर रहा है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आई गेस ऐसे बंदे चाहिए, चाहिए एक क्लास में तो चाहिए ना। ओके, आई एम ग्रेजुएट, एमसीए फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर फ्रेशर, 2020 पास आउट, ओके बीटेक सीएससी पास आउट हो गए थर्ड ईयर में। ओके ग्रेट। अभी तक किसने किसने इंटरव्यूज दिए, लाइक पास आउट वाले या फोर्थ ईयर वाले। ओके, काफी लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू देने का, राइट। इंटर्नशिप इंटरव्यू आई हैव गिवन। ओके मी, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग इंटरव्यू, यू हैव बीन थ्रू लाइक फेलियर्स, कोई सिलेक्ट हुआ होगा, या किसी को बोला होगा लाइक नेक्स्ट टाइम अप्लाई आफ्टर 6 मंथ्स, होता रहता है। ओके,
will let you know the resume format. Okay, कोई तो बोल रहा है जूम करो, इसे जूम करो, ठीक है, काफी जूम हो गए। ओके, तो फर्स्ट थिंग रिज्यूमे में एक आइडियल रिज्यूमे, सो ये मेरा फेवरेट रिज्यूमे फॉर्मेट है। ऐसा ना हो कि लाइक आपका ही ऐसा ही चाहिए, बट ये मेरा फेवरेट रिज्यूमे फॉर्मेट है बिकॉज ये थोड़ा सा सिंपल लगता है, काफी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और इंफॉर्मेशन काफी होने के बाद भी ऐसे एकदम कंजेस्टेड नहीं लगता। सो इट्स सिंपल टू रीड एंड एटीएस फ्रेंडली एज वेल, एंड वर्ड में भी है। सो व्हाट योर रेज्यूमे शुड कंटेन, सो फर्स्ट थिंग आपका क्लियर फुल नेम हो एंड एड्रेस हो। एंड फर्स्ट थिंग अबाउट द एड्रेस, नेवर मेंशन योर फुल एड्रेस। व्हाई यू नो, जैसे का लाइक अप्लाई कर रहे हो, सपोज अभी मैं पुणे में बैठा हूँ बट मैं मुंबई के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बट मेरे रिज्यूमे में पुणे लिखा है। सो लाइक जो इंटरव्यूअर होगा वो बोलेगा यार ये तो पुणे का बंदा है, रिलोकेशन का पैसा जाएगा। तो उससे इससे अच्छा सिलेक्ट करने से अच्छा जो मुंबई लोकेशन का है तो उसे लेते हैं। ठीक है, आप लाइक ये देखो, एड्रेस अपना चेंज करते रहो। अगर आपको जॉब लग गई, सो यू कैन लाइक शिफ्ट तो हो सकते हो, बोल दो हम अवेलेबल अवेलेबल हो जाएंगे मुंबई में, अभी टेम्पररी पुणे में है, तो यू कैन हैव अ रीजन। बट आपका एड्रेस कभी फुल मत डालो, एक सिटी डालो बस, सिटी डालो, एरिया डालो। ओके, सो आई मेंशन इट एज योर टेम्पररी एड्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ईमेल, यू शुड हैव अ प्रोफेशनल ईमेल। ऐसा नहीं हो रहा कि किसका कॉलेज है xyz.com @xyz, ऐसा ना हो, बी प्रोफेशनल। दिस रेज्यूम लाइक रेज्यूमे में आपका ईमेल ऐसा हो कि जैसे आपका नाम, आपका सरनेम, बस @gmail.com @yahoo.com, जो भी आपका हॉटमेल वगैरह हो। डोंट यूज योर कॉलेज ईमेल आईडीज, बिकॉज आफ्टर सम टाइम वो तो बंद हो जाएंगे, तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल भी लगता है। मेंशन योर फोन नंबर एट द टॉप ऑफ रेज्यूमे। ओके, ग्रेट। So first thing personally I like mentioning about your education, like mentioning about your schooling. So start with पहले बी के बारे में बताओ, आपने बी बीटेक एमसीए बीसीए जिसमें हो उसके बारे में बताओ, लाइक थर्ड ईयर में हो, सो लाइक मेंशन थर्ड ईयर तक का सीजीपीए। ओके, जो पास आउट है वो पूरा बी का सीजीपीए या बीटेक का एमसीए का लगा सकते हैं। आफ्टर दैट 12, या जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है डिप्लोमा, उसके पहले 10। ऐसे ऐसे क्रोनोलॉजी थोड़ी सी रिवर्स होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें आपके लाइक रिसेंट मार्क्स में स्किल्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ओके, डिप्लोमा के वाले कितने लोग हैं यार, मुझे जानना है। डिप्लोमा वाले थोड़े से कोडिंग में अच्छे होते हैं, सुना है मैंने। डिप्लोमा से कौन इंजीनियरिंग में आया है? ओके, so we'll try to communicate in English because some of the attendees don't know Hindi. Okay, no, not a problem. Okay. There are many of the attendees from diploma as well. Okay, great. So first thing you should add your degree, like BCA, MCA, BE, BTech. After that, you should add your HSC details, like your HSC score, percentage, like college name, junior college, bolo ya school bolo. After that, you can add your 10 details, 10 school name, year of passing out from the school itself, and your percentage. Okay, great. And the next section. So in this next section, it's mentioned about the professional experience. But being fresher, we don't do have like प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, राइट? सो इसमें क्या ऐड कर सकते, क्या क्या ऐड कर सकते, हैव एनी आइडिया? ओके, लेट मी टेल यू। सो वी कैन ऐड इंटरव्यू एक्सपीरियंस और लाइक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, academic experience, certifications. So, but don't add this all these things. So you should only add internship experience
and your projects, your final year projects, mini projects, and major project. So I guess आपने तो पहली तो स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है. इंटर्नशिप तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट? कोड क्लास के साथ आपकी अच्छी इंटर्नशिप हो रही है. सो आपका ये सेक्शन तो ऑलरेडी 50% तो फिल हो चुका है. ओके, आपने तो 50% तो कवर कर लिया यार, प्रोफेशनल सेक्शन, जो भी आपका एक्सपीरियंस है. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट यू शुड ऐड योर प्रोजेक्ट्स. सो like you are good to go with web development project, AI project, not a AI project specifically. You can have a good ML project. So like it can be a basic or kind of advanced, but only mention that projects you do have a relevant knowledge or you have worked on. ऐसा ना हो कि आपने प्रोजेक्ट डाल दिए बड़े बड़े, यूट्यूब यूट्यूब से देखा प्रोजेक्ट, copied it from the git code, and you like pasted the project, mention the title AI ML project I have done in my BE final year, BTech final year, but you don't do have a like relevant experience or the skill related to that project. So that will not work in the interview. At the end, the interviewer will know कि यार ये तो fake ad किया है ना. So only the project you have completed during your final year or third year or personal project, you should add that project only. And project should match your skills. It's like you are applying for the web development interview, but you do have added AI ML projects or Android projects. So that will not work. Okay. So you should change your resume according to the job role and job description. Got my point? If yes, please give me a thumbs up. Great. Someone is saying a Google recruiter tell me don't add ML project for Google interview. See, if you're applying for SDE role, so you should not, you should add like relevant project to that role. So you should add like a hard code project. Suppose, for example, if you're working with Java, so you can add a core Java project as well as advanced Java project. But if you're not applying for a AI ML role or cloud role, so like adding the non-relevant project like ML projects, so won't work, right? No. Okay, great. Okay, can you suggest me a web project? Is CGPA matter? Yes. So talking about CGPA, so first thing we are adding like our degree marks and year of passing out and CGPA. So CGPA matters here. See, first thing is that like when I see your resume, I will see your CGPA. So having a good CGPA is a plus point. But if you do have relevant skills and good projects, internships, तो CGPA उस केस में मैटर नहीं करे. But like having a good CGPA is plus point. But you should have at least, I think, above 7 CGPA. So how many like 7 CGPA? Yes, I guess 7 CGPA will work. तो किसका किसका like 7 CGPA के ऊपर है अभी तक? 7, 7.5. I have 8. Okay. So if you do have 7 or 7.5, I guess you are eligible to apply for company. जो भी कैंपस कम में कंपनी आएंगी उसमें तो आप एलिजिबल हो. 8.9, 8.8, 7 point. Okay, someone is saying 3.2 out of 4. Okay, great. Okay. See, having a good number will like it will add impression surely. So CGPA matters अगर आपके skills नहीं है तो like थोड़ा सा तो impression जाना चाहिए ना. You should have either you should have a good CGPA, like a good project or good internship. See, you should maintain a balance actually. Having a CGPA like above it, having good project, having good internship will like surely add a star to your resume. So the recruiter will see, yeah,
यार लाइक इस बंदे का रिज्यूमे तो लेना चाहिए, व्हाई शुड आई हायर हिम, जो लाइक 7 के नीचे हो, उसने इंटर्नशिप नहीं की, ना प्रोजेक्ट्स किए. सो योर CGPA मैटर्स, and as well as your internship matters, and certifications also, and projects also. Okay. कोई 9 के ऊपर नहीं है क्या यार? 9 CGPA, 9.1, 9.2. ओके. सर मेरा CGPA अच्छा नहीं थी, बट मेरे प्रोजेक्ट अच्छे थे. Yes, that's what I'm telling you. If you don't have a good CGPA, so like focus on making like good projects relevant to your skills. Also, like opting good internship, that may be online, offline, that doesn't matter. Like you can't change your CGPA, right? But you have a choice to make projects, to land into good internship, or to have a good certification. So you should all focus on these skills. CGPA एक decent हो तो भी अच्छा है. 9.2 वाले भी आ गए. Yes, 10 12 marks matter or not. See, some of the companies coming at the campus look for the candidates who do have like in 12 75 के ऊपर, और in 10 80 के ऊपर. So like out of 50 companies, only 2 to 3 companies will have that criteria, but remaining like 48 companies will not have that criteria. So they will have a simple criteria: you should have at least 7 CGPA or 6.5 CGPA, and like you do have a relevant skill related to that job role, and some kind of internships or certification or the projects. So yeah, 10 12s matter, but not in every case. That's a rare case, but you do have 98% opportunities left, right? So don't look for the 2% opportunities. Okay. Okay, so let's move on to the next section. So yes, technical expertise. So you can add your technical skills. And one more thing, like adding technical skills, I've seen like काफी बंदे सी भी ऐड कर रहे हैं, CPP ऐड कर रहे हैं, जावा ऐड कर रहे हैं, पाइथन ऐड कर रहे हैं. And I asked them ki like in which year you are. So they are saying like I'm in second year. So I do have a subject called CPP, C, Python during my first year, second year. So I've added these skills. Please don't add so many skills, like so many languages. एक लैंग्वेज ऐड करो या दो करो मैक्स. जावा, जावा ऐड कर रहे हो तो CPP तो रिलेवेंट है. So it kind of similar. If you're adding Java, C, CPP, Python, so पूरा messed up है. So only add 2 to 3 core languages, and you can add one database language like SQL or MongoDB, Oracle, which one you are like using. And you should also add like core subjects. How many are good with the core subjects? किस किस को OS पसंद है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के तो बारे में जानते हो ना? OS, locks, CPU, GPU, TPU, registers. ओके. DBMS वाले कौन कौन है? SQL, MySQL, SQLite, like star from. ओके. ऐसा ना हो कि यार you only know select star from table and you are adding your skill SQL expertise. So like काफी लोगों को SQL आ रहा है. Okay, great. So you can add one database language. You can add one or two, like you can add max 3 languages, and you can add other tools as well.
suppose for example you are into Python. Okay, so you can add analytical skills, you can add like BI skills, like Power BI add kar sakte hai. Okay, and you can add like PowerPoint skills. Yes, these are non-technical. You can add non-technical skills as well, such as public speaking. You can add like communication, like a team leader. So that can be relevant when you do have a relevant experience in that field. Suppose if you have like attended any event or hosted any event during your college tenure, or if you are a part of some क्लब्स होते हैं ना कॉलेजेस में, गूगल क्लब या एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, कौन कौन पार्ट है मतलब क्लब का नाम मेंशन करो। जीडीएससी में कौन 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 है? जीडीएससी गूगल डेवलपर स्टूडेंट काउंसिल या जीडीजी, कोडिंग क्लब, आई ट्रिपल ई, या लाइक पर्सनल कॉलेज का कोई भी क्लब हो वो टेक रिलेटेड। समवन इज एडिंग कैंटीन। कैंटीन कौन सा क्लब है? ओके, ब्लॉकचेन enthusiastic also आई, टेक ट्राइब रोबोटिक्स, ग्रेट ग्रेट, क्रॉपसी क्लब। Okay, so I guess many if you are like part of the club. Okay, so you can add that experience as well in your resume. So add your role, what were your responsibilities, roles, what was the task you performed during the tenure of the club period. You can add everything in your resume. So that will be in the non-technical section. जो भी additional आपके skills है वहाँ पे आ जाएंगे। Okay, जो भी additionals में you can add, yes, जो भी आपके awards होंगे, scholarship होंगे, या आपने जो भी क्लब्स में काम किया, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, वो एक्स्ट्रा एडिशनल सेक्शन में ऐड करना। ओके, गॉट माय पॉइंट। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इफ यू आर फ्रेशर, your resume should be of single page only. Just single page resume, including your all skills, projects, internships, technical skills, as well as non-technical skills, and some additional details जो भी आपके टेक्निकल या नॉन टेक्निकल अचीवमेंट्स हो। ओके, गॉट माय पॉइंट। thumbs up if you got my point. Great. So should we add virtual internship or not? Yeah, you can add a virtual internship, but the virtual internship should be from the relevant organization, like जो भी registered वाले हो. Or you can have internship from the Forge, as well as Google internships, Harvard University. You can add also the courses and internship type of a program from Udemy as well, from the Coursera. Or also, if you are into paid certifications, you can go for Oracle, Microsoft, or AWS. So certification surely will add an impression on your resume, but that's your personal choice because the certifications you do need to pay amount, and I guess वो amount काफी ज़्यादा है, like 7 से 14 हज़ार तक, right? Okay, great. So let's move on to the next point. With resume, you should have one more thing. What we should have with a resume? Hints. किसी को कुछ like resume के साथ क्या क्या चाहिए और we should add with a resume while applying for a company or organization, like for job role or for internship? Only resume will work, or we should have something else? Okay, LinkedIn profile. Okay, great. Okay, I guess किसी ने तो like hint पकड़ ली.
Yes, I'm talking about cover letter. So how many of you know what is cover letter? कवर लेटर के बारे में कौन कौन जानता है? थम्स अप जानता तो you can use this emoticon. Letter. No idea. I don't know. Portfolio. Yes, portfolio is also important if you're applying for web development role or Android role or some non-technical role. Okay. Okay. So no idea about cover letter. Okay, great. So we'll tell you what is cover letter. Like how should your cover letter look like? What things should cover letter include? We'll talk about the cover letter now. Okay. So everything clear about the resume. Now we are moving to the cover letter. Okay. So cover letter is nothing but kind of a professional email. जो भी आप लेटर बनाते थे ना स्कूल में, लेटर राइटिंग उसी तरह है. बस बस in this you are writing a letter to recruiter, to manager, or to HR. So your first thing, talking about the cover letter, you should add your details to whom you are writing to. In first paragraph, you should mention who you are, what are your like skills, where are you from, talking about your background, education, and everything. The first paragraph should cover your details only, nothing more than that. Okay, great. Okay, so next paragraph comes. यहाँ पे आपके just like professional details होनी चाहिए. Should have your skills, your achievements, and everything about your academics, your GFG score or something, coding score, और जो भी आपके relevant achievements है related to that job role and that job description. Okay, and next third. So third paragraph should mention like when you are available to join or like why you are suitable for this job role, why they should hire you. Mention some like technical skills as well as non-technical skills. Like let them know you are like eligible for this role. I do have relevant problem solving skills. Like मैं टीम को मैनेज कर सकता हूँ अच्छे से. I can manage my time efficiently. I'm more into practice. I'm more into solving the problem rather than being running away from it. So you should mention why you're relevant to do this job role. Okay, in the third paragraph. And what's the fourth paragraph about? So you should have a formal call to action. That is fourth paragraph. You should tell them like how to get connected, like please assist me, something like that. Looking forward to hear from you soon. Add your contact details and be enthusiastic in the last paragraph. Like recruiters should know you are like eager to know more about this job role. You are eager to join. You are eager to have an interview at his organization. So the fourth paragraph is most important. That is call to action. Depending upon fourth paragraph, the interview will conclude ki should I give him an opportunity to interview at our organization or not. And last, you can add a sweet and simple thank you message, and you can add this cover letter. And but one more important thing, ऐसा नहीं कि कवर लेटर एक बार ही बनाया और रिज्यूमे एक बार ही बनाया सभी जगह वो अप्लाई कर रहे हैं. When you are applying for the different role and different roles have different JD. JD क्या होता है? Job description, right? So you should change your key points accordingly. You should change your skills. थोड़ा सा tweak कर दो. Suppose the job role is, for example, SQL developer. So somewhere in between resume and cover letter, add I do have a relevant experience in SQL developer while working in my internship or while working on the project. So try to add the keywords which are seen in the job role profile or in the JD or what company is looking for. Make your profile, cover letter, and resume that should like company चाहे कि यार ये बंदा hire हो जाए. We want this candidate because everything seems relevant to our organization. This is what exactly they want. Okay, so you should make your resume crafted in such way that that you should look like you are relevant candidate for the job role as well as your
cover letter. But okay, I will talk about the ATS, JD and keywords. Yes, ये तो भूलना ही नहीं चाहिए. Resume बना लिया, cover letter बना लिए, but we are not focusing on the ATS. What is ATS? As I mentioned before, key many organizations are using ATS, application tracking system. So your resume is automatically getting shortlisted or rejected by the ATS system. So how should your resume be ATS friendly, or like cover letter should be the ATS friendly? So first thing I mentioned earlier as you should have a relevant keywords related to job description as well as the job role in your resume. Add that skills which are mentioned in the JD. Add that keywords mentioned in the JD as well. And again, you can add that job role somewhere in between your cover letter as well as a resume. So what these things will do, So these things will help ATS to shortlist your resume. So ATS, so this resume will be ATS friendly. So ATS will automatically select your resume and will send it to the HR. Then soon you will get a interview call from the HR. So always focus on JD, job role, resume, cover letter. After you are done with crafting your resume with good skills, good project, good internship, certification, technical and non-technical skills. Okay. Okay. So let's move on to the next point. Just I mentioned before, two things are important while you are going for the resume. Sorry, going for the interview. First, resume. Second, LinkedIn skills. You should have a good LinkedIn profile. सबके पास तो इंस्टाग्राम होगा ना. कौन कौन इंस्टाग्राम यूज कर रहा है और कौन कौन लिंक्डइन यूज कर रहा है बताओ. कमेंट कमेंट. बोथ 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 बोथ. Okay. How many of you have LinkedIn account? Send +1 in chat. Both +1 +1. Okay. Okay, +2. I guess you do have both accounts, Insta as well as LinkedIn. I'm using LinkedIn account from last 2 years. Okay. So if you are in your second year and third year, so I recommend you to please make your LinkedIn account, start using LinkedIn. So you will get more professionally connected with the recruiters as well as you'll find your mentor over there. Like पीछे अभी कोई तो बोला यार कि मेरे पास mentor नहीं है. So you will get a mentor over there. So you should follow someone relevant to your field. Suppose if you're into web development, so you should find some creator on LinkedIn or on YouTube and you should follow him. And like उसके videos देखो वो क्या projects बना रहे हैं वो उस company में काम कर रहे हैं. So you should have well research about that person, follow his tips and tricks. जो भी आपको वो recommendation दे रहे हैं वो follow करो. ऐसा नहीं कि सबको follow करके रखा है, सबके videos देख रहे हैं बट इंटरव्यू तो कहाँ पे नहीं दे पा रहे. किसी एक या दो ही बंदों को फॉलो करो जो आपको रिलेवेंट लगे. ग्रेट. ओके. So let's move on to the next point, that is LinkedIn. So why LinkedIn is important? So as I mentioned before, so LinkedIn helps you to show who you are. So what do you have? मतलब आपके पास क्या relevant skills है, आपके क्या achievements है अभी तक, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए या लाइक आपने क्या क्या इवेंट अटेंड किए, आप किस क्लब ने क्या कंट्रीब्यूट किया है. So everything you can showcase this on LinkedIn. So LinkedIn is your social profile for the professional life. Okay, got my point. Suppose if you are into content writing and if you do like to use LinkedIn, you can try building a personal brand. And why personal brand helps, by personal brand you can have a good connection. If you do have a good connection, you will get a lot of opportunities as well as the referrals.
from the industry experts as well as the recruiters. If you make the good connections, so you can leverage the power of networking. So you can ask them for the referrals. uh, hey, please, can you refer me for this job? I do have relevant experience and skills. So accordingly, if you do have relevant experience, your resume is good, everything seems to be optimistic and like proper, so they will surely like give you a referral, and surely you can leverage them and convert them into the interview opportunity. Okay. So but many of you have a LinkedIn account, बट उस पे कुछ डाला ही नहीं है, फोटो भी नहीं है, बस नाम लिखा है। और बस अभी इंटर्नशिप वालों ने बोला था कि कवर लेटर, ये इंटर्नशिप लेटर अपलोड करना है, इसलिए तुम लिंक्डइन बनाया है। ऐसा कौन कौन है जिसने बस ये इंटर्नशिप का टास्क और ऑफर लेटर डालने के लिए लिंक्डइन बनाया? किस किस का लाइक प्रॉपर लिंक्डइन प्रोफाइल है? रेज योर हैंड, एंड इफ यू डोंट हैव, एड +1 विल लेट यू नो कि कैसे एक थोड़ा सा गुड प्रोफाइल बनाया। I do. Okay. Many of you have a good LinkedIn profile. Okay. A proper profile. Okay. +1, +1, +1. Okay. I guess half of the people have a LinkedIn profile, and others want to know कि good LinkedIn profile कैसा दिखे. Okay, we'll let you know कि what should you add in your LinkedIn profile. Okay. So I'm sharing you the screenshots of my LinkedIn profile just for a reference. Okay. See, is this visible to you? Well, है? Yes. Okay, great. Okay. So first thing you should have like एक अच्छा सा फोटो ऐड करो, हेडशॉट हो। ऐसा नहीं है कि यार इंस्टा का कोई फोटो डाउनलोड किया, वही लगा दिया। Add some professional image. Okay. And after your name, at this section, you should add what are your relevant skills, what you are interested in. Or if you're working somewhere, mention that. Or what you are enthusiastic about, you can mention that things. For example, you can mention web development, enthusiastic in web, again AI/ML, in content. For example, I have mentioned data science, machine learning, content, and PR. So you can add accordingly. Okay. And after that, most important section comes here is license and certificate. Suppose if you do have a good certificates or some courses you have buy, or like some paid or unpaid courses, you can add your certificates. You can showcase your certificate over here in the certificate section. So when a recruiter sees your LinkedIn profile, or someone out there on LinkedIn sees your profile, so your profile will see like थोड़ा सा स्टैंड आउट कर रहा है यार ये बंदा, इस बंदे ने सर्टिफिकेशंस की है, and he's active on the LinkedIn. You do have a good LinkedIn profile, good connections, good experience. So LinkedIn will surely add something into your profile. Add your certificates, add a about us section. So you can mention about us section that is relevant to your resume. ऐसा नहीं है कि LinkedIn के about us section में you are showing you are enthusiastic in AI/ML, and in resume you are in you are a web developer. So when you are crafting your LinkedIn cover paper, resume, you should mention relevant skills in all these three things every time when you are applying for the job role. You should check everything, then only you should apply. ऐसा नहीं है कि रश में लिंक दिखी, किसने ये लिंक भेजी या किसी पोर्टल पे ओपनिंग दिख रही है, मैं गया, मेरा एक रिज्यूमे पड़ा हुआ है, कवर लेटर पड़ा हुआ है, वही अपलोड कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट गेटिंग नर्वस, यार मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया, मुझे कोई इंटरव्यूज कॉल नहीं आ रहा। ऐसे तो किसी को भी नहीं आने वाला। सो यू शुड चेंज योर JD, sorry, the keywords
फ्रॉम योर रिज्यूमे जो भी जेडी में वो ऐड कर दो, जॉब रोल ऐड कर दो, लिंक्डइन थोड़ा सा अच्छा बनाओ, ऐड रिलेवेंट एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड एवरीथिंग। ओके, जिसको ये यार ये लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं दिख रहा, उनके लिए मैं लाइक लिंक्डइन की लिंक शेयर कर देता, सो यू कैन हैव अ लुक एट माय प्रोफाइल, और ऑल्सो यू कैन हैव अ लुक एट जो भी क्रिएटर के प्रोफाइल हो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। शेयरिंग माय प्रोफाइल लिंक। ओके, आई एम बिट कंफ्यूज। ओके ओके, या कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। ओके, सो आई एम एडिंग माय लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक, यू कैन हैव अ लुक एट इट। So can I pin this message? Let me see if I can pin this message. I will accept your request when I'm done with the webinar. You can send me a inbox who you are, like why you do want to get connected with me, and surely we'll get connect with you. आपके जो भी doubts है, we'll try to solve it. Okay? Okay, great. ठीक है, so आपको समझ में आया कि resume कैसे बनाए, cover letter कैसे बनाए, how should you have your LinkedIn profile, about your about your resume, specifically talking about internships, certifications, projects, technical skills as well as non-technical skills. If you do have like experience in जो भी clubs में experience हो, या extracurricular achievements, or if you do have achievements in non-technical activities like in sports में हो, you can add that. That shows आप टीम में काम कर रहे हो या sportsmanship है. So everything you can add, but relevant चीज़ें ऐड करो बस. अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा है, सो वो ऐड करने में मतलब कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, बट आपके पास कम है, तो आप अचीवमेंट ऐड करना आपके लिए लाइक बेनिफिशियल होगा. ओके ओके, सो हु एम आई? मैंने आपको मैं खुद को लाइक इंट्रोड्यूस किया ही नहीं. आप जानते हो लाइक मैं कौन हूँ? अब मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता मुझे. ओके, वांटेड टू नो मोर अबाउट मी. यस यस यस. ओके, यस बोल रहे हो आप. यस नहीं बोलते ना, फिर भी मैं तो बताने ही वाला हूँ. ओके ओके. काफी लोगों ने तो हाँ ये पोस्टर्स देखे ही होंगे. ओके, ग्रेट. Okay, so basically my name is Prasad. So I have completed my BTech, जो भी BE बोलो, in computer science. मैंने data science ऑप्ट किया था यार, जो भी ऑनर सब्जेक्ट्स कहते हैं. और मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू AI ML एंड डेटा साइंस. एंड अभी काफ़ी लोग मुझे हेट करेंगे यार, बट वेब डेवलपमेंट मुझे पसंद नहीं आया. मतलब मैं करता हूँ, कर सकता, बट काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ रही है उसमें. HTML सीखो, CSS सीखो, JS सीखो, फिर फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, फिर मर्ज स्टैक आ रहा है, मीन स्टैक आ रहा है, फिर मोंगोडीबी, SQL, फिर कोई फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं. काफी काफी कुछ सीखना पड़ रहा था. सो एक हेक्टिक. उसके बाद भी यू शुड हैव अ गुड पर्सपेक्टिव लाइक हाउ योर वेब पेज शुड लुक लाइक, वेब डिजाइनिंग, UI UX GUI. काफी कंफ्यूजिंग, इतना बड़ा कैसे सीख लेते हो यार.
मैं तो नहीं सीख पाता। सो आई एम बेसिकली डेटा साइंस AI ML इंथुजियास्टिक। और आपकी तरह ही मैंने सारी लैंग्वेज सीखी है। मैं भी रेज्यूमे में डालता हूँ सब, सी डाल रहा हूँ, CPP डाल रहा हूँ, जावा, पाइथन, SQL, कभी कभी तो C# भी डाल देता हूँ। क्या ही है, पूछ लेंगे तो बता देंगे इस कोर्स में। तो ऐसा तो करना नहीं है ना। When you're applying for the proper job role, you should only add 2 to 3 relevant skills. Okay, great. So let's move on to the paradox. अब काफी देर से लाइक पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स क्या है पूछ रहे हो। ओके, लेट यू नो। सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट पैराडॉक्स, तो पैराडॉक्स इज अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी। सो ये हमने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। सो लॉकडाउन में करना क्या है, सो बैठे बैठे लाइक सोचा कि टेक्निकल ब्लॉगिंग करते हैं, नहीं नॉन टेक्निकल करते हैं, थोड़ा मीडिया करते हैं। लाइक वाइल स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, मैंने देखा कि काफी लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। सो हम क्या क्या करें, ये सोच रहे थे। उस टाइम पे दिमाग में आया कि विथ माय पार्टनर जो भी है, प्रार्थना, आशीष, संयुक्ता, मनोज, तो इन सब ने सोचा कि लाइक कुछ तो स्टार्ट करते हैं। एंड थिंग इज दैट कि हम कभी एक दूसरे को मिले नहीं है। स- सब हम लोग एक दूसरे को ट्विटर पे, लिंक्डइन पे या रैंडम किसी ग्रुप से मिले, ऐसे दोस्त बने और सोचा कि आप कुछ तो करते स्टार्ट। सो वैसे पैराडॉक्स हमने स्टार्ट किया, एंड नाउ पैराडॉक्स इज entertainment and media company. Okay, if you do want to know more about Paradox, you do have an ID here, Paradox_India. You can visit profile if you wanted to know more about Paradox. Okay, so ये वेबसाइट थी जो पैराडॉक्स की हमने खुद बनाई थी। आप बोलोगे तो ये वेबसाइट किसने बनाई। सो बेसिकली ये वेबसाइट कोडिंग से नहीं बनाई, ये बनाई हमने नो कोड लो कोड। नो कोड लो कोड कौन 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 जानता है, नो कोड लो कोड सुना है, नो कोड लो कोड। नो, आई डोंट नो, समवॉट। ओके, किसने विक्स सुना है, विक्स स्टूडियो, वर्डप्रेस, एलिमेंटर। आई डोंट नो अबाउट इट, आई एम हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। यस वर्डप्रेस, यस वर्डप्रेस, आई नो वर्डप्रेस, आई हैव वर्डप्रेस। ओके, यस सर, वर्डप्रेस। ओके, सो मैं टेक्निकल पर्सन हूँ वैसे भी, थोड़ा सा नॉन टेक में भी ज्यादा हूँ मैं वैसे। बट ये वेबसाइट हमने कंप्लीटली वर्डप्रेस पे बनाई, क्योंकि सी, इफ यू आर टेक पर्सन, कि आप खुद बना सकते हो। हमारे में भी एक टीम में टेक पर्सन था, तो उसने काफी चीजें खुद से एडिट की, खुद से कोड लगाया। बस कुछ कुछ सेक्शन उसने वर्डप्रेस से उठाया, क्योंकि उसके लिए हेल्प हो रही थी। सो आवर मोटो वाज टू मेक अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट दैट वी आर गोइंग टू होस्ट। उसको तो लाइक उसका कोडिंग स्किल्स तो निकल दिखानी थी ना, कि मेरी कोडिंग स्किल्स से मैं ये बना पा रहा हूँ सेक्शन, ये लोगो बना पा रहा हूँ मैं, ये इमोटिकॉन्स बना पा रहा हूँ, ये मेनू बार बना पा रहा हूँ। सो वी हैव मेड दिस वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस। नो, एक नो माई कोड, यहाँ पे मेरे कोई कोडिंग स्किल्स नहीं दिखा रहा हूँ। ओके, सो मी विथ, हम लाइक पैराडॉक्स में अलग अलग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। सो विद द सम ऑफ द वेल नोन पीप्स, माय पर्सनल फेवरेट यार, योगेश सर, बाम्बू इंडिया के फाउंडर। हमने like काफी इवेंट साथ में किए, एंड काफी कुछ सीखने मिला सर से। बाकी शार्क टैंक वाले इवेंट पे काफी लोग, काफी इवेंट्स किए साथ में। यार काफी हो गए फोटो, काफी हो गए शो ऑफ। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट एज अ टीम और एज अ सिंगल पर्सन, लाइक हम पैराडॉक्स की टीम भी, या मैं खुद भी सिंगल पर्सन, बीन लाइक इनवाइटेड एट GDSC क्लब्स, as well as IEEE club, as well as ESL club, for delivering some content, or like conducting some events or webinars or some seminars or some kind of technical and non-technical event as well. Okay, so we were invited at these clubs and we delivered some deliverables over there. And also we were invited at, जो भी पुणे के लोग हैं तो वो
MIT जानते होंगे। अब पुणे का कौन कौन है यहाँ पे, कमेंट डाउन। पुणे पुणे पुणे, MIT, पुणे पुणे। पुणे पुणे, लाइक सब लोग अपनी यार एक बार सिटी डाल दो, कौन कौन किस किस सिटी से। पुणे, रांची, चेन्नई। चेन्नई, चेन्नई के फैंस भी दिख रहे हैं। नोएडा, सोलापुर। ओके, पाकिस्तान। ओके ग्रेट, हैदराबाद, वारंगल, इंदौर, दिल्ली। ओके, काफी इंटरनेशनल लोग भी है, कोई नेपाल से, कोई पाकिस्तान से। ग्रेट यार, आप लाइक सब ज्वाइन हो रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो। पंजाब, विजयवाड़ा। ओके, मार्स। हाँ, एलियंस भी इंटर्नशिप कर रहे हैं शायद। बैंगलोर, बैंगलोर वाले तो यार कोडिंग में एक्सपर्ट होंगे ना आप लोग। टेक हब, सिलिकॉन वैली। यार मार्स पे कौन कोडिंग कर रहा है यार? मार्स पे, मार्स पे। यार हम लोग यहाँ कॉलेज में नहीं कर रहे, पुणे में रह के नहीं कर रहे, मार्स पे लोग कोडिंग कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, वहां पे लाइक ठीक से रहना है, एलोन मस्क आपको ढूंढ सकते हैं। Okay, काफी हुआ मजाक। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो वी वर इनवाइटेड एट MIT, Sieged Institutes in Pune itself. All these are colleges from Pune. आपने आपको अगर इनवाइट किया तो मैं आ सकता हूँ यार बैंगलोर, बट मार्च तो मैं नहीं आने वाला है, और इंटरनेशनल भी नहीं आ सकता, पासपोर्ट नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल। ओके, सो वेल दैट्स मी। काफी मेरे बारे में आपने अब लाइक जानकारी ले ली, बस मिसयूज मत करना किसी चीज को। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द वेबिनार। सो लेट्स फोकस ऑन व्हाट थिंग्स वी आर लेफ्ट विद। ओके, so before going interview we should like pre-interview preparation होना चाहिए। So what things you should cover, we will talk about that। Okay, first thing is researching about the company। Suppose if you're applying for a company, you should have a like proper research, like that company is working in which domain, whether it is product based company or service based company, उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स है, उनका फाउंडर कौन है, उनके विजन क्या है, गोल्स क्या है, मोटो क्या है, what they are exactly looking for the from the candidate। So you should have a complete research about the company। थोड़ा सा आप जासूसी कर सकते हो ना, जैसे भी आप किसी की प्रोफाइल देख रहे हो, प्रोफाइल से आप ढूंढ लेते हो यार अच्छा ये बंदा है, तो इसने इसने ये काम किए है, तो वैसे ही थोड़ा सा कंपनी का भी रिसर्च करो। ओके, और लाइक आफ्टर दैट यू शुड ऑल्सो हैव अ गुड रिसर्च अबाउट द जॉब रोल द कंपनी इज ऑफरिंग। एंड थोड़ा सा टाइम लो, बस जॉब रोल देख के मत अप्लाई करो, थोड़ा सा वहाँ पे JD करके सेक्शन होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, ओपन करो, read description, what they actually want, what the skills are mentioned over there, what certification you should have, what tools you should know। थोड़ा सा JD पढ़ो, उस हिसाब से if you find कि like you are eligible for that role, according to the JD you can add that keywords into a resume, into a cover letter, and then you can apply to that specific role। Great, and most important thing, मुझे तो लगता है, मैंने काफी लोग इंटरव्यूज में देखे हैं, एक प्रॉपर आउटफिट में नहीं आते हैं। आउटफिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड बी मोर प्रोफेशनल, राइट। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसने ओवर साइज T-शर्ट पहन लिया, या किसने जैकेट्स पहन लिए, किसने बूमर जैकेट पहन लिया, किसने बूट्स पहन के आया है। सो ऐसे तो वो निगेटिव इम्पैक्ट तो ऐड नहीं करने वाला, बट पॉजिटिव तो इम्पैक्ट वो ऐड ही नहीं कर रहा। और वैसे भी आप कोई आंसर नहीं दे पा रहे, तो वो ऑटोमेटिकली विल गेट कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव इम्पैक्ट। सो बी इन द प्रॉपर आउटफिट, ट्राई टू बी थोड़ा सा फॉर्मल, फॉर्मल में जाओ, और अच्छा भी लगता है फॉर्मल में जा रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। ओके राइट, सो आई प्रीफर कि
you should wear a formal clothes for the interview. बस एक ही दिन तो पहनना है ना. Okay. So practice your answers. So common questions जो इंटरव्यू पूछते हैं, क्या क्या कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको पूछे गए अभी तक इंटरव्यू में? नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस. ओके, लेट मी नो द क्वेश्चंस. क्या क्या पूछे अभी तक? Given any interview, have you heard about the question, tell me about yourself, or tell me your strength or weakness? I guess many of you are fresher, so थोड़े लोगों ने इंटरव्यूज दिए, थोड़े थोड़े लोगों ने क्वेश्चंस भी सुने. टेल मी अबाउट योर सेल्फ, why you are fit for this role, why should we hire you? Okay, some of them are from first semester. Okay, so you will go through these questions soon जब अप्लाई करेंगे आप कंपनीज को, और you will have your mock interviews or GD. At that time you will get used to these questions. So thing is that you should be prepared with your answers. ऐसा ना हो कि उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, and you are crafting your own answers. So don't go with like, I'm Prasad, I completed my education from this. I have done this project. So be confident, have proper gesture and posture while talking to the person, maintain eye contact, be more confident. At the interview, what thing matters, कि आपको कितना भी स्किल्स आते हो, बट आप वहाँ पे आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, यू नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, आपके जो भी बॉडी लैंग्वेज है थोड़े से अनईजी लग रहे हैं, तो दैट विल नॉट वर्क. सो एट द इंटरव्यू, पर्सनली आई फाइंड कि दो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है इंटरव्यू में, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स, अपार्ट फ्रॉम द आउटफिट? क्या क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको? दो स्किल्स. ओके, कोई बोल रहा है बॉडी लैंग्वेज. ओके, और कुछ? ओके, कॉन्फिडेंस. ओके, दो में का एक तो मिल गया मुझे यार, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस. ओके, और एक बचा, कम्युनिकेशन. यस, ये दो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक कम्युनिकेशन, आपके पास बहुत स्किल्स है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट टू द इंटरव्यूअर, लाइक व्हाई यू आर एलिजिबल फॉर दिस रोल, like what skills you do have, what projects you have done till now, you're not able to communicate about your internships, about your projects, about your certificates, so at the end कुछ फायदा तो नहीं होने वाला. So you should have a confident body language, a confident posture, a proper gestures, and an excellent communication skills. मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बट इफ यू आर स्पीकिंग, आपकी जैसे भी इंग्लिश हो यार, थोड़ी सी ऐसी फ्लुएंसी नहीं है, ओके, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट. आप जो बोल रहे हैं ना एकदम कॉन्फिडेंटली बोलो. एंड जो भी एकदम कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट मेंटेन करके एक प्रॉपर स्मूथिंग, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, थोड़ी सी स्माइल रखो. या आई नो कि सब नर्वस फील करते हैं, बट यू शुड प्रैक्टिस एट होम योर आंसर्स. टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई यू आर फिट फॉर दिस रोल. सर्च, गूगल पे सर्च करो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड बाय एचआर और मैनेजर. So you will get a list of many questions over there. So you can practice these questions. You can craft your own answer according to your skills, projects. Craft your own answer. Try to practice in front of mirror, or you can have like group of friends. आपस में खुद का इंटरव्यू ले सकते हो तुम. लाइक पहले तो इनिशियली स्टार्ट करो कि आपस में फ्रेंड फ्रेंड के इंटरव्यूज ले रहे हैं, या आपके किसी भैया या दीदी हो, या कोई भी रिलेवेंट पर्सन हो, तो आप उसके उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. और यू कैन प्रैक्टिस ग्रुप डिस्कशन एज वेल विथ योर कलीग्स. नॉट कलीग्स, आपके जो भी फ्रेंड्स हो उनके साथ आप कर सकते हो. ठीक है, जो भी लाइक इंटरेस्टेड हो. ओके, स्पीकिंग स्किल्स, आई कॉन्टैक्ट, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चंस. इफ company will schedule a meeting in a holiday or Sunday, okay, then how we will schedule your day. Okay, हाँ, एचआर आपको ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेंगे. आपकी प्रॉब्लम स्किल्स, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो टेस्ट करेंगे. आपके लाइक हाउ यू आर हैंडलिंग द प्रेशर.
They wanted to check कि the candidate is fit for this role, or he's able to handle the pressure, whether he's a problem solver or just one following the rules. जस्ट आए, थोड़ा सा काम करेंगे, अपना पेमेंट लेंगे, जो भी पर्क्स है उठा रहे हैं और जाएंगे. So you should have a relevant skills, a proper problem solving skills. You should be a good team player as well as a team leader. You should be good enough to communicate your problems, your skills, and everything you are going through. At the end, confidence is matters as well as your communication skills matter. How many questions are, oh, what we are writing? Okay. How to answer these questions? So how many asking questions HR? ओके, सो डिपेंड्स आपके इंटरव्यू पर वो कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी आपका जॉब रोल है, जो भी आप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, इतने ही क्वेश्चंस पूछेंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंजेस, everything changes from the company to company, HR to HR, and also for the different job roles you will get a different set of questions. तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ वाले का इंटरव्यू हुआ उसको ये क्वेश्चंस पूछे, but my luck was not into my favor. I got rejected for this job role. तो होता है. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं. सो यू शुड बी एटलीस्ट प्रिपेयर्ड विद द टॉप 20 क्वेश्चंस आई गेस. जो भी आप फील्ड है आपकी, वेब डेव के टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू योर स्किल्स, रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू योर सर्टिफिकेशन, related to your academic experience, related to your non academic experience, and जो भी आपकी स्किल्स है, जो भी पॉइंट्स मेंशन है, उसके टॉप 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद. लाइक एक्चुअली दैट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड रेज्यूमे में एक एक वर्ड लिखा है ना, उसका आपको लाइक साउंड नॉलेज तो होना चाहिए कम से कम. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये प्री इंटरव्यू टिप्स है. लाइक प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चंस. जो भी आपके क्वेश्चंस है, लाइक एट द एंड आपको एक एचआर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि यू डू हैव एनी क्वेश्चन लाइक फॉर द कंपनी. एंड मैं देखता हूँ कि लाइक 98%, 99% लोग सर बोलते हैं नो सर, आई डोंट वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, और आई डोंट डू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर यू. लाइक एक्चुअली यू शुड हैव अ गुड रिसर्च ऑफ द कंपनी. प्रिपेयर 2 to 3 questions. Maximum you can prepare 3 questions. Ask that questions to HR, to manager. इससे क्या होता है पता है? कंपनी को लगता है कि आप लाइक रियली इंटरेस्टेड हो कंपनी के बारे में जानने के लिए. Ask them like what you are expecting from the candidates, what are the deliverables you expect for this job role, what are you looking for, what is the product you are currently working on. थोड़े से लाइक उनके फेवर में क्वेश्चंस पूछो, तो लाइक उनको भी लगता है कि लाइक so the candidate is interested in the particular job role, is enthusiastic to learn more, is really interested into this company. So you should like showcase yourself in a such way that you should seem to be more eligible for this job role than other candidates appearing for the interview. Okay, got my point. And most important thing, plan your logistic. काफी बार होता है कि यार सुबह इंटरव्यू में कैसे जाए. You should plan everything before a day. Everything be prepared with the skills. ऐसा ना हो सब प्रिपेयर कर लिया, बाइक रेडी कर ली, ऑटो बुक कर ली, कैब बुक कर ली, आउटफिट है, बट मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड विद माई स्किल्स. मैंने जो भी प्रोजेक्ट किया था उसके बारे में भूल गया हूँ. मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू शुड बी कॉन्फिडेंट विथ योर रेज्यूमे, विथ कवर लेटर. बाकी ये थिंग्स बाद में मैटर करते हैं. एंड गेट अ गुड नाइट स्लीप. वैसे रिकमेंड करते हैं, पर किसी को तो नींद आएगी नहीं कल इंटरव्यू होगा तो. बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, so you will have a good interview. Everything will go with the flow. Okay. So but during interview तो क्या क्या करना चाहिए, ये important thing है ना. Okay. So we'll let you know कि during interview क्या क्या करना चाहिए. At least you should arrive 30 minutes prior to the interview. Why 30 minutes? आप एक नए environment में जा रहे हो. अगर आप if you're attending an offline interview, so you should arrive 30 minutes or 1 hour prior, because you will get used to with that environment. So आपको अचानक जाने पर डर नहीं लगेगा थोड़ा सा.
यूज टू हो जाओगे आप थोड़ा सा लोगों से, एनवायरनमेंट से, पर्टिकुलर मीटिंग रूम से. ओके, दैट्स फाइन. अराइव अर्ली, greet people with smile, be confident, like make a eye contact. एंड मोर, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो ना, वहां पे जाके ज्यादा तो बोलना नहीं है. जो भी लोग बोल रहे हैं ना वो ज्यादा सुनो. कोई भी आपके जो मतलब कैंडिडेट्स आए इंटरव्यू देने को, उनकी बात सुनो. एचआर क्या बोल रहे हैं, लाइक कंपनी के एम्प्लॉय किस बारे में बात कर रहे हैं, आपके अराउंड क्या हो रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज you should be prepared with your skills, with your experience, and everything. As I mentioned earlier, projects, internships, जो भी चीजें हैं. ओके. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट को पूछेगा इंटरव्यूअर से, आपको एसक्यूएल आता है, तो आपने बोल दिया हाँ आता है. आपने लाइक ये टूल यूज किया है, यस आता है. आर यू एबल टू वर्क विद अस, बस हाँ में हाँ मत मिलाओ. आंसर्स आपके एकदम ऑनेस्ट होने चाहिए about your background, about your professional life, as well as the personal life, because these things matters. At the end, आप अगर उस कंपनी में सिलेक्ट होते हो तो ये कभी ना कभी तो सामने आने वाला. सो रिजेक्टिंग एट द इंटरव्यू इज गुड. कि अगर आप सिलेक्ट होते हो और आप उसके बाद वो आपको फायर कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बुरा है. सो बी ऑनेस्ट अबाउट योर बैकग्राउंड, अबाउट योर सेल्फ, एंड लेट इंटरव्यू नो कि लाइक व्हाट योर लाइक आप किस चीज में स्ट्रांग हो, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. एंड लाइक जनरल इंटरव्यू आस्क व्हाट आर योर वीकनेस. जो भी आपकी रियल वीकनेस है, यू कैन मेंशन, अगर वो हार्मफुल नहीं है तो इस जॉब रोल के लिए. इफ ऐसे आपके कोई वीकनेस है जो इस जॉब रोल के लिए हार्मफुल है, तो वो तो मेंशन मत करो. उल्टा आप उसको लाइक कवर अप करने की कोशिश करो, या उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं देखो. एंड थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनो, इम्प्रेसिव बनो. एक आपका खुद का कुछ पर्सनैलिटी ट्राइट वहां पे रहना चाहिए. बी जेन्युइन एज मच एज पॉसिबल. Be honest, be genuine, be confident, maintain eye contact, and have a good communication skill and carry a pleasant smile. ये थोड़े से इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं. पर्सनली तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं विथ योर टेक्निकल स्किल्स. ओके. Research, as I mentioned before, research what actually company wants before the interview. When you are at the office or at an organization, अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो थोड़ा सा जाओ लिंक्डइन पे देखो कंपनी के बारे में, गूगल पे देखो, ग्लास डोर पे देखो, yeah, search for the interview experience, top questions asked, job roles, candidate working in that company. Have a complete company research what actually they want for that particular job role. And suppose if you find someone on LinkedIn already working in that job role, you can have like a brief talk. You can DM them politely and asking them कि ये job role क्या है, कैसे करें prepared. So you will get like a relevant knowledge about that job role, and you will actually know what actually company wants. Okay, great. ठीक है. Suppose if you got to know कि what actually company wants, don't oversell yourself. So you are like, oh, yes, I got to know the company wants SQL developer, company wants again AIML developer who should have a relevant Excel skills, good with the Python, good with the communication skills, good with the Power BI tool. You got to know these points, but don't oversell yourself just by saying, "Sir, I don't know how to use Power BI, how to build the professional dashboards. I know business analytics." Don't oversell yourself. What you know, actually mention that. Be honest with yourself, as I mentioned earlier. Because when you are getting hired, as I mentioned, you have to prove yourself. अगर आप प्रूव करने में फेल होते हो, so unfortunately, you can be also fired from that job role. So being honest about your skills is most important, I guess, with confidence. Okay. As I mentioned earlier, stand out. So leave your impressions. Like HR को याद रहे यार, ये बंदा आया था. He was like being confident, politely बात कर रहा है, pleasant smile है. He was not good with the English, but फिर भी जो communication उसने किया यार मुझे याद है. Like उसके अच्छे projects थे, या अच्छे certifications थे, या अच्छे CGPA.
कुछ तो पर्सनालिटी ट्राइट चाहिए जो आपको लाइक मेक यू यूनिक एंड मेमोरेबल फॉर द एचआर, फॉर द रिक्रूटर्स, whether it's online or offline. So try to be yourself. So as I mentioned, nothing beats being yourself, true to yourself. Suppose if you are like ये थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है तो इसकी तरह मैं बिहेव कर रहा हूँ, तो वैसे तो वर्कआउट नहीं होने वाला. जो आप खुद हो वैसे दिखाओ. ओके. यस. एज आई मेंशन अर्लियर, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन इज किंग. सो अभी किस किस को लग रहा है कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, हम इंटरव्यू में डर जाते हैं और हमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है. किस किस को लग रहा है मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ या थोड़ा सा डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं? ओके. बस बाकी सब लोग कॉन्फिडेंट है. ओके, फेयर इज इम्पोर्टेंट. हाँ, डर तो होना चाहिए. तो डर के मारे तो हम लाइक कंपनी की रिसर्च कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग गुड रेज्यूमे, कवर लेटर, एडिंग रेलेवेंट स्किल्स, रेलेवेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू जेडी. दैट्स, तो वो सब फेयर के कारण, बट दैट्स अ पॉजिटिव फेयर. ओके. ओके, फेयर इज इम्पोर्टेंट. ओके, फेयर फाइन. ओके. आई गेस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 3 to 4 टॉपिक्स आई गेस. जो भी लिंक्डइन बनाना, रेज्यूमे बनाना, again cover letter, what you should do and don't during the interviews, before the interviews, and lastly talking about the keep in contact. So when you are like attending online or offline interview, you should have a like friendly contact with the candidates जो आपके साथ थे, or with the interviewer. Like you should get connected to them on the LinkedIn. And ऐसा नहीं कि इंटरव्यू होने के बाद आप रश कर रहे हो कि let sir please let me know what is my feedback, whether I got selected or not. Never ask an interviewer after your interview. Just wait for a day or two. They will let you know. If they don't, you do have their contact details. You should email them professionally, or you can ask your recruiter. Or if you're interviewing from the college, you can ask your college. But don't get into rush. उनको DM कर रहे हो, अगर LinkedIn पे connected है तो उनको Insta पे ढूंढ लिया, वहाँ पे DM कर रहे हो, या किसी से नंबर ले लिया. Never do this. You can do max की, you can email them, or you can ask your recruiter from the college if you are opting the campus interviews. Okay. And always, yeah, be grateful to the opportunity. If you get selected or like got rejected, like always be grateful for the opportunity they offered you, for the time they offered you. Be grateful, be pleasant, keep smiling, and be confident. Maintain eye contact, and in future में तो help करेगा ही करेगा. And as I mentioned before, stay true to yourself. एट द एंड आप अगर स्किल्स झूठ बोल रहे हो, कुछ अपने सर्टिफिकेशंस फेक लगा है, सो यू विल बी ऑलवेज इन फेयर व्हेन यू आर वर्किंग एट दैट ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज समहाउ एंड कभी ना कभी तो वो सामने आने ही वाला. एंड बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ विल श्योरली हेल्प इन योर लार्ज करियर. जो आपका स्पैन ऑफ करियर है उसमें तो आपको लाइक पर्क्स देगा ही देगा. ग्रेट. एंड आई गेस दिस इज जस्ट द बिगनिंग. लाइक कि आपके करियर की बिगिनिंग है, बट दिस इज द एंड ऑफ द सेमिनार. एंड लास्टली आई वांट टू टॉक अबाउट, एज मेंशन, किसने पूछना था कि इंटरव्यूज के कितने राउंड होते हैं और कैसे होते हैं. सो विल लेट यू नो द लास्ट पॉइंट अबाउट दैट. ओके. सो इंटरव्यूज में जनरली पहला राउंड होता है एप्टी. एप्टी एप्टी एप्टी. किसने एप्टी सुना है और किसको एप्टी में अच्छे हो आप लोग? एप्टी, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजन माइंड. सुना है. Logic is little weak for me. See, most important thing according to me is logic.
एप्टी में भी, कोडिंग में भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी, एंड एज वेल एज इंटर्नशिप में भी, व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग योर प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन. सो लॉजिक तो सबका इनिशियली वीक होता है, बट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंट, यू विल बिल्ड योर लॉजिक टाइमली. सो प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. उससे आपका लॉजिक, कॉन्फिडेंस सब सब बिल्ड होगा. ओके, एफटी. आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ एफटी. सी, अगर 100 कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो 50% ऑफ द कैंडिडेट्स गेट शॉर्ट लिस्टेड. किस पे के बेस पे? एफटी के बेस पे. सो एफटी इम्पोर्टेंट है. सो लाइक प्रैक्टिस बेसिक क्वेश्चंस, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव, थोड़े से रीजनल, जो भी इंग्लिश क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करो. एफटी इम्पोर्टेंट है. काफी लोग रिज्यूमे अच्छा बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, सब सब प्रिपेयर्ड है, टेक्निकली साउंड है, प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, सीजीपी अच्छे हैं, बट गेट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ एफटी. आई वाज वन ऑफ देम. मेरे प्रोजेक्ट्स अच्छे थे, एफटी बस थोड़ा सा वीक था, तो उसी कारण एफटी में मैं काफी शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं हुआ, शॉर्ट लिस्ट. बट थोड़ा सा मैंने एफटी प्रैक्टिस किया, काफी इंटरव्यूज दिए ड्यूरिंग माई कैंपस, ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड एट, जो भी कंपनीज के नाम अब मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैंने ज्वाइन नहीं की कंपनीज. यस, आई डू हैव अ स्टार्टअप. पैराडॉक्स इंडिया भी है, बॉब भी है. सो बॉब इज द सेकंड स्टार्टअप वी आर लॉन्चिंग सून. दैट्स वाई मैंने उसके बारे में आपको नहीं बताया. एंड ऑल्सो विल बी ज्वाइनिंग, एक कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ मैं. सो उसके बारे में भी आपको मेरे लिंक्डइन पे पता चल जाएगा थोड़े दिन बाद. ओके. सो आफ्टर दैट, एफटी के बाद जीडी इंपॉर्टेंट. जीडी क्या होता है? यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, जेडी नहीं, जीडी बोल रहा हूँ. ग्रुप डिस्कशन. सो अभी तक आपने लाइक डिबेट या ग्रुप डिस्कशन किया है किसी ने? डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, या स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, या किसी क्लब में? ओके 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 ओके. सो एक जीडी राउंड होता है, उसमें लाइक मैक्सिमम 10 कैंडिडेट्स होते हैं, समटाइम्स 12, एंड ओनली 2 to 3 कैंडिडेट्स गेट सिलेक्टेड. एंड हाउ दे आर गेट सिलेक्टेड, बेस्ड अपॉन confidence, communication skills, relevant knowledge to that topic, thinking skills, ability to think fast, respond faster, being precise and confident. So these are important things while preparing for the GD, during the GD, and before the GD. So टेक्निकल तो हम प्रिपेयर्ड होते हैं, बट दो चीज़ों को हम लोग बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं, एक तो एप्टी, दूसरा जीडी. You should also focus on your apti, GD, prepare with your mentors, prepare with your friends, or also you can DM me. We'll let you know कि apti के लिए कैसे prepare किया जाए, क्या resources follow किया जाए, GD के लिए क्या किया जाए. And after that, you will have your technical rounds, whether it will be technical 1, 2 or 3. Maximum तो मैंने सुना है तो 3 तो technical round होते हैं, और minimum 2 तो होते हैं. Technical तो if you are good with the technical skills, surely you will crack the technical rounds. And if you're cracking technical rounds, so last round is मैनेजरल राउंड और एचआर राउंड. वो तो बस आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपके बस लीगल चीज देखते हैं, एंड यू गेट सिलेक्टेड. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड तो इस पे टेक्निकल 1 और टेक्निकल 2 है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, रेज्यूमे, इंटर्नशिप्स. एंड ऑलरेडी आपने तो अच्छी इंटर्नशिप्स कर रखी है कोड क्लॉज के साथ. एक अच्छी सर्टिफाइड इंटर्नशिप है, आईएसओ सर्टिफाइड, एमएससी रजिस्टर्ड. सो दैट विल ऐड अ प्लस पॉइंट टू योर रेज्यूमे, एज वेल एज और एक इंटर्नशिप करो, आपको टाइम मिल रहा है तो कोड क्लॉज में करो या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में करो. थोड़े सर्टिफिकेशंस कर लो, थोड़े से प्रोजेक्ट्स कर लो. अब जैसे अपने कोड क्लॉज में प्रोजेक्ट्स किए, वो प्रोजेक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हो, या उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट करो, वो ऐड कर दो. तो टेक्निकल राउंड आपने क्लियर कर लिया ना, आपने लाइक 80% तो इंटरव्यू क्रैक कर लिए. बाकी आगे का बचा हुआ तो प्रोसीजर्स है, बस एचआर, मैनेजर, वो तो डिपेंड अपॉन कॉन्फिडेंस, हो जाता है क्लियर अगर आपने टेक्निकल क्लियर किया है तो. एंड आफ्टर दैट, टेक्निकल के बाद एचआर मैनेजर होगा, उसके बाद क्या, ऑफर लेटर शेयर कर दोगे,
आपके लिंक्डइन पे। फिर मैं देख लूंगा यार, आप जो भी कनेक्शंस में हैं उनके ऑफर लेटर देख लूंगा। आई गॉट सिलेक्टेड एट दिस इंटर्नशिप और सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब रोल। ऐसे कुछ ना कुछ तो दिखेगा यार मुझे लिंक्डइन पे। दिखेगा या नहीं? ओ डू आई रिसीव स्वैग्स और प्राइजेस? हाँ, आप आपके स्वैग्स और प्राइजेस भी लिंक्डइन पे शोकेस कर सकते हैं। और आई गेस कोड क्लॉज में भी जो भी टॉप परफॉर्मर्स है तो उन्हें भी स्वैग्स एंड प्राइजेस मिल रहे हैं ना, राइट? किस किस ने लाइक कोड क्लॉज की इंटर्नशिप अभी कंप्लीट की है और ऑन गोइंग है? कमेंट ऑन गोइंग और कंप्लीटेड। गोइंग, ऑन गोइंग, कंप्लीटेड। ग्रेट 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 ग्रेट। पर्सनली आई हैव सीन द टास्क ऑफ द इंटर्नशिप्स। टास्क काफी अच्छे हैं उनके भी, लाइक कोड क्लॉज के ऑफिशियल से उन्होंने काफी अच्छे से टास्क क्राफ्ट किए। सो लाइक जो भी उन्होंने टास्क मेंशन किया ना, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ऐसा नहीं कहाँ से कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हो। सॉल्व करो, थोड़ा सा आपको नॉलेज मिलेगा अच्छे से। बिल्ड योर प्रोजेक्ट, यू कैन ऐड दैट ऑन योर रिज्यूमे, तो आपका 50-50 काम हो जाएगा। रिज्यूमे बिल्ड हो जाएगा, इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो जाएगी, एंड ऑलरेडी यू आर पोस्टिंग दिस वीडियोज एंड एवरीथिंग ऑन लिंक्डइन। तो लिंक्डइन तो बिल्ड हो रहा ही है ऑटोमेटिकली। और आप अगर खुद से प्रोजेक्ट कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो, तो आपका रेज्यूमे बिल्ड हो रहा है, तो आपका इंटरव्यू भी प्रिपेयर्ड हो रहा है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस टास्क बाय योर सेल्फ। ऑप्ट ऑप्ट गुड टास्क रिलेवेंट टू योर स्किल्स। एंड वैसे भी आपको स्वैग्स तो मिल रहे हैं अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। और वैसे भी आपको तो इंटर्नशिप दी तो जा रही है ना, ऐसा नहीं है तो इंटर्नशिप तो नहीं मिल रही। सबमिट योर टास्क, कोड क्लॉज विल श्योरली लाइक जो आपके पर्क्स होंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे, वो डिलीवर कर देंगे। ओके, आई गेस आई एम डन विद द टॉपिक्स। कोई क्वेश्चंस? सो जस्ट विल हैव लास्ट 5 to 10 minutes एंड विल कंक्लूड द सेशन। कोई क्वेश्चंस तो पूछ लो यार, बस 5 minutes, 5 मिनट आंसर करने वाला हूँ मैं। बाकी यू कैन DM me on LinkedIn or you can get connected to my social profile. कोई क्वेश्चंस लास्ट के 5 मिनट्स में? सी जो भी आपके क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटर्नशिप, गेट कनेक्टेड टू द कोड क्लोज। बाकी ask me question related to the seminar, related to interviews, resume, the topics which I covered during the interview. Relevant questions पूछो बस लास्ट के 5 मिनट्स के लिए। Okay, can you tell me again how to add internship related certificate or other anything resume? See, you can't add internship certificates into resume. You can add on LinkedIn or on your social profiles or on your portfolio. On resume only you can add a line like I have completed this certification from this organization. बस इतना ऐड करो। पूरा का पूरा सर्टिफिकेट या पूरा डिस्क्रिप्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है अगर वो रिलेवेंट सर्टिफिकेट है तो। बट यू शुड हैव अ प्रूफ ऑफ एवरीथिंग यू आर एडिंग ऑन resume, that the proof of work you should be have। लिंक्डइन पे हो या पोर्टफोलियो हो या आपके खुद के फाइल में रेडी हो, सबका आपके पास प्रूफ चाहिए, ऐसे नहीं सर्टिफिकेट्स डाल दिए। ओके, आई हैव लो CGPA। ओके, स्टडिंग इन लो पॉइंटर्स 6 इन लास्ट सेमेस्टर। सी, एज आई मेंशन अर्लियर, आपका अगर लो CGPA है सो यू शुड मोर फोकस ऑन योर स्किल्स। अगर आपकी स्किल्स अच्छे हैं ना तो आपके CGPA मैटर करते ही नहीं। कोई नहीं देखने वाला आपकी CGPA। अगर आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, आप अच्छे से तगड़ी कोडिंग कर रहे हो, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, यू आर सुटेबल कैंडिडेट्स, ऑटोमेटिकली CGPA तो कोई दिखने नहीं वाला। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे 9.48 है बट कोडिंग वीक है, प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं है, तो आपको कोई सिलेक्ट भी नहीं करने वाला। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इफ यू आर हैविंग लो CGPA। बट अभी जितना है तो उतना तो मेंटेन करो, और बाकी फोकस ऑन जो भी चीज़ें इंप्रूव की जा सकती है। हाउ टू इम्प्रूव स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव स्किल्स, बहुत मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन। बस एक ही टिप देना चाहता हूँ, एक ही ट्रिक है स्किल्स इंप्रूव करने की। क्या हो सकती है बताएं? प्रैक्टिस।
बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो कोई करता नहीं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन कौन कौन ले रहा है यार, मैं कोडिंग करूंगा इस साल? बताओ यार, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बताओ, रिलेटेड टू टेक। कोडिंग, या ये स्किल सीखनी है, या ये कोर्स कंप्लीट करना है, या इंटर्नशिप करनी है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया है नहीं अभी? रेगुलर प्रैक्टिस। कौन कौन यार 1 जनवरी से यार सब लोग कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे? ऐसा किसने सोचा है? 24 में आई विल कंप्लीट इंटर्नशिप, आई विल कंप्लीट प्रोजेक्ट्स। ग्रेट, सबने कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस लिए। कुछ चीज कर रहे हो उसका, मेरे तो जॉब, इससे ग्रेट लिस्ट रखी। ओके, वांट टू बिकम यूट्यूबर। अरे बाप रे, अभी भी लोगों को यूट्यूबर बनना है? 2024 में आ गए फिर भी यूट्यूबर बनना? बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास रिलेवेंट स्किल्स हो, उस डोमेन में आप इंटरेस्टेड हो तो बन सकते हो। वैसे भी इंजीनियर तो इंजीनियरिंग छोड़ के सभी करते हैं ना। इंजीनियर तो बाकी फील्ड्स में एस कर रहे हैं, राइट? ओके, रेजोल्यूशन विल हैव अ जॉब नेक्स्ट ईयर। ओके, आई विल ट्रीट माय पेरेंट्स टू डिनर विद माय फर्स्ट सैलरी। ऑसम ऑसम ऑसम। ये अच्छा रेजोल्यूशंस मैं देख रहा हूँ बॉयज की तरफ से। ओके, ग्रेट ग्रेट, काफी अच्छे रेजोल्यूशंस है। ओके, और कोई लास्ट क्वेश्चन जो थोड़ा रेलिवेंट हो, जो मैंने कवर नहीं किया हो? कोई तो पूछ रहा है, विद लो सीजीपीए, बैकलॉग्स, एजुकेशन गैप, व्हाट वुड यू सजेस्ट मी? यार आप मुझे लिंक्डइन पे डीएम करो, विल लेट यू नो कि आप क्या कर सकते हैं, लाइक आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम तो 3 है, सॉल्यूशन हमें ढूंढने पड़ेंगे अब, अच्छे अच्छे। सो अगेन आई एम शेयरिंग माय लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक, जिसने भी मिस किया था कैन गेट कनेक्टेड। अबाउट डेवऑप्स, सी, डेवऑप्स के बारे में, आई एम नॉट अ डेवऑप्स एक्सपर्ट, और आई डोंट डू हैव रेलेवेंट नॉलेज इन डेवऑप्स। सो लाइक गलत बताने से अच्छा नहीं बता रहा मैं डेवऑप्स के बारे में, क्योंकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने उस पर काम नहीं किया। डेवऑप्स सीखना तो इम्पोर्टेंट है, सो यू कैन आस्क समवन who is a DevOps expert or working at DevOps, or you can get connected to me. Will connect with you someone जो DevOps कर रहा है, so he will let you know about DevOps, or will ask CodeClause to arrange a seminar on DevOps. Okay, great। हो गए ना क्वेश्चन सबके? बाकी जो भी क्वेश्चंस हो ना, सो डीएम मी ऑन लिंक्डइन। एंड आपको जो भी लाइक क्वेश्चंस थे, लाइक आपको इंटरव्यू सैंपल्स चाहिए, रेज्यूमे सैंपल्स चाहिए, या कवर लेटर सैंपल चाहिए, सो विल सजेस्ट यू कि आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हार्वर्ड रेज्यूमे टेम्पलेट सर्च कीजिए। सी, हार्वर्ड रेज्यूमे टेम्पलेट्स, यू विल गेट रेज्यूमे टेम्पलेट्स। यूज वन ऑफ दिस टेम्पलेट, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो भी टेम्पलेट्स हैं। आप आई गेस ढूंढ लो थोड़े से, इसी वेबसाइट पे कहीं मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे जो भी टेम्पलेट्स आप यहाँ सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे, और यू विल गेट योर रेज्यूमेज एज वेल एज कवर लेटर्स। एंड ये ध्यान रखना, बात रेज्यूमे और सीवी अलग होता है। इफ यू हैव एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आई मीन, so your resume is considered as CV, so that can be of 2 or 3 pages, but resume single page, एक ही single page। Okay, got my point? And we'll show you some samples as well। See, uh, is my screen visible to you? Yes, yes, visible. Okay, yes, see, these are a few resume samples, you can edit them, or like मैंने sample आपको share किया है already, ये आपको दिखाया था ना मैंने?
तो वैसे खुद बनाओ, थोड़ा सा खुद से बना रहे रिज्यूमे वर्ड पे, अच्छा लगता है यार, कुछ तो बनाया, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है. So add your education. So this is first sample. If you have like good experience and good internship, you can add at the top, and you can add education at the second number, and जो भी आपके additional skills है. But this is my favorite format क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा है, थोड़े से मुझे अच्छे सीजीपीए थे, इसलिए मैंने सीजीपीए ऐड किए, और थोड़े से स्कूल्स ऐड किए, बाद में एक्सपीरियंस ऐड किया, थोड़े से टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्किल्स ऐड किए. बाकी यू कैन हैव दिस फॉर्मेट एज वेल. यू कैन ऐड योर समरी, योर स्किल्स, जो भी आपका स्ट्रांग है ना वो आप ऊपर ऐड कीजिए. ओनली टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस और एजुकेशन और अबाउट स्किल्स. बाकी तो नॉन टेक्निकल स्किल्स या एडिशनल्स जो ऊपर ऐड करके आपका रिज्यूमे एकदम खराब होने वाला है. सो बस यू कैन शफल दिस टू सेक्शंस, एक्सपीरियंस, समरी, स्किल्स एंड एजुकेशन. दिस 2 to 3 sections. Okay. Which certification should I mention on resume? जो भी आपने किए हो. ओके, कोई तो पूछ रहा था मुझे, आई गेस किस किस को मेरा रेज्यूमे देखना है. मेरा खुद का रेज्यूमे, जिस रेज्यूमे से मैं काफी बार रिजेक्ट भी हुआ हूँ और काफी बार सिलेक्ट भी हुआ हूँ. कोई इंटरेस्टेड है रेज्यूमे देखने में? आई यस यार, डीएम करो, डीएम करके हम बात करेंगे, रिज्यूमे आपको दिखाएंगे कैसे बनाते, क्या करें. जो भी डाउट्स है विल ट्राई टू सॉल्व ऑन लिंक्डइन. और अगर आपके रिलेवेंट डाउट है, आपको और कुछ चाहिए, सो विल अरेंज वन मोर सेमिनार at CodeClause itself. Okay, I guess we are done with this session. So, do we have HR CodeClause candidate or co-organizer here? Someone from CodeClause team? Yes. Thank you for Prasad for joining and giving us a good. Great. Yes. So, should I conclude the session, Yes, yes, or you do yes. You have any can conclude. formalities left with? No, no, no formalities. All the attendance is marked, and we will provide certificate until 2 days, next working 2 days. Okay. Yes, you will get certificates within 2 to 3 working days from CodeClause itself. So, how they will get certificates? They are asking by email. Yes, yes, yes. On by which email they registered, they will get on certificate on that mail. Great, you will get your certificates. Chalo then. Thank you. Bye bye. See you on LinkedIn. Thank you for joining, Prasad. Thank you, CodeClause, for the opportunity. Thanks, sir. It's great. See you. Bye bye.